evening, everyone. Welcome to this session on making a timetable for UPSC Civil Services examination. So, today we want to. I have taken many sessions in the past which have been about how to study, how should to schedule our preparation. But today, my primary focus is on okay, every day, how should you be planning your day? Like I'll be talking about two set of students like students who are preparing for this examination part-time. That is, if you are a college going person or if you are a working aspirant, then you have little time, like you have only 4 to 5 hours, whereas there are students who have 8 to 10 hours because they're preparing full time for the examination. So I'll be talking about a plan for both you people, both kinds of students. But before I go there, like let me first take 10 minutes to help you understand why a timetable is non-negotiable. Why without having a timetable, there would be issues, there would be problems in your preparation. Dekho, if you look at the UPSC syllabus in reality, you'll find there are 500 plus micro topics that you have to cover. There are 4 GS papers which covers these micro topics. There are 2 optional papers, essay, CSAT, and then current affairs. Current affairs is a big burden. Now, if you don't have a timetable, if you don't have a plan, you will cover these things in 2 to 3 years. And that is why for most of the students who do not have timetable, who do not have a clear-cut plan, clear-cut strategy, you will see they are saying for the first time, yes, this year I'm fully prepared, this happens in 3rd year or 4th year. If you want that in your very first attempt, you are in a situation where you are done with all these things. You should have a plan for it. You should have a schedule for it in advance. Now, let me take you to the other aspect. In your plan, it's important that there is effective time given for revision. If you go to the science behind our ability to remember things, human memory is such that it drops 70% of the things that you have read on day 2 only. If you are not revising, 70% of things are gone on the 2nd day only. Similarly, even if you revise on the 2nd day, if you don't revise it at the end of week or if at the end of the month, you will keep forgetting it. And that is why revision is very crucial. So our timetable should also have proper plan for revision. And this timetable should also keep this fact in mind that human brain gets tired in 90 to 120 minutes. So 1.5 hours, 2 hours पढ़ लिया है, उसके बाद ना, do not stretch it. Take some break, take some rest. Give rest to your brain. Like making a timetable where you're studying for 4 hours, 5 hours continuously is not suitable. Whereas you study for 2 hours, give yourself 15 minutes of break, and then again you can stretch for 1 hour, 1.5 hour. That would make sense. So these are certain things that we should keep in mind when it comes to making a plan, making a timetable. Now, one more thing. Like here, I specifically want to talk about most of the students who are not ready for the examination in the very first attempt. It's not because of their lack of hard work. It's not because of their lack of preparation. It's primarily because they did not plan it properly. In first year, all of you, I have 50 plus students watching me live right now. All of you would be very sincere, very dedicated. You are really hardworking, and that is why you're planning to prepare for this exam. Any Tom, Dick, Harry would not do this. This exam requires a lot of dedication. So I'm saying most of the students, all of you are dedicated, but still very few of you would be ready for the exam at the end of a year. It happens because timetable nahi tha, plan nahi tha, kab kya padhna hai, wo pata nahi tha. And one of our students got rank 3 in the last result. He said that he did not study for hours, ki baith gaye 8 ghante ke liye padh rahe. He studied in blocks. There's a 2-hour block, there's a 15 minutes break or half an hour ka break, then there's a 2-hour block. Similarly, there's another student of ours who got All India rank 7 in the previous exam, and she said when compared to her previous attempts when she was confused
or where she was putting in a lot of efforts but she was not getting results. Weekly revision plan, when she inculcated it in her future attempts, she was able to do it very easily. She was able to clear the exam very easily. And that is how important revision is, how important studying in small blocks is. Now, एक और चीज देखते हैं. देखो, if you will not have a plan, the preparation will be chaotic. When the preparation will be chaotic, there will be inconsistency, there will be slow coverage of syllabus. You'll feel like exam is approaching, you're still like 25% prepared, 30% prepared. This will lead to loss of confidence, frustration, and failure. Plan is important, timetable is important, scheduling is important. Without it, even if you are the most intelligent person on earth, you will not be able to clear this examination. Have a proper plan कि इतने टाइम में ये करना है. रोज मेरे पास 5 घंटे पढ़ने को है या 10 घंटे पढ़ने को है, तो these are the things that I have to do and work on it. You may not achieve those targets on the first day or on the second day, but even if you achieve 80-90% of it and if you work according to it, you will be on the right track. But there are students who do not plan for anything और वो 16-16 घंटे पढ़ने का नाटक करते हैं, I would say, because they'll sit in library, they'll talk to people and they'll show कि देखो मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी गया था, रात में 10 बजे आया हूं. But if you did not have a proper plan कि today I have to finish this portion for the from 10 a.m. to 12 p.m. I'll be studying this. If you don't have it, then success would not come to you. Now एक और चीज देखते हैं. Sometimes I've seen students, वो ना कोई टॉपर अपना टाइम टेबल पोस्ट कर देता है एंड दे एंड अप कॉपिंग इट. दे से कि आई विल आल्सो फॉलो इट. बट टॉपर सिचुएशन and your situation is different. In fact, if you look at the schedule of 2 different toppers, that it will be drastically opposite. So your plan doesn't have to be copy pasted. Your plan doesn't have to be something like कि जो लास्ट ईयर रैंक 1 का प्लान था मैं वही फॉलो करूंगा. नो, योर प्लान वुड बी एज पर योर सिचुएशन, योर कंडीशन, योर लिमिटेशंस, योर स्ट्रेंथ, योर कैपेबिलिटीज, योर likings. Like if you're a person who prefers to stay awake at night and study, then your timetable should keep that in mind. If you're a person who is a morning person who gets up at 4 in the morning, your timetable, your plan should be according to that. Copy paste timetable will not work, and something very very rigid is also not going to work. अगर आप 16 घंटे का प्लान बनाने वाले हो तो वो काम नहीं करने वाला है. मैं ये शुरू में I'll take 10 minutes and then I'll briefly give you a broad plan for a rough plan. Like I'll not tell you specifically सबको ये करना है. I'll tell you broadly what you people should be doing, and based on your condition, based on your timings, based on how much time you're spending in college or how much project work you have, or whether you're a full-time aspirant, you will modify it accordingly. But let me bring you to the 6 pillars first. कि देखो, अपने प्लान में ये रखना कि GS is the core part of your preparation. So here in GS we'll say कि in our plan it should not be like in one day we're doing three different subjects. I've seen students plan ऐसे करते, सुबह 9 से 12 हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 2 to 5 I'll study geography, then from 6 to 8 I'll study polity. Don't do that. Go one subject at a time. अगर ज्यादा हो रहा है तो 1 GS subject and 1 optional, that's it. Do not jump onto 3 subjects at one go. दूसरा, predicted time. Like यहाँ पे what I'm trying to say is, if you fix a slot, stick to that. Don't change it. Sticking to that, like being disciplined and ensuring कि if you have a 6-hour का study plan, you are following it, would be good enough. But if you'll not be disciplined, if you'll not be following a schedule, then even if you have a 16-hour का plan, you will not be very successful. दूसरा, देखो, other than GS, you have to ensure that
other than ensuring that you're doing one GS subject at a time, you have to ensure that after doing the classes, if you're doing classes, you're reading the notes, you're revising it, and you're applying it by writing answers, doing MCQs. This has to be in the plan. This has to be in your schedule. Without this, it will not work. Similarly, current affairs is not something that can be done at the end. Every day, 45 minutes you have to spend in current affairs. So, जो timetable आप बनाओगे, the timetable that you make, it has to have this component कि यार every day 40 to 45 minutes. It can be when you are traveling, it can be just before you go to bed, it can be the first thing that you do in the morning, but 40 to 45 minutes you'll have to spend on current affairs. In your plan, you should have a proper revision mechanism, that is within 2 days, if possible within 1 day, but within 2 days you should be revising things. There should be a revision day every week, so that whatever you have studied in the week, you should have planned for revision there. Every month, like in 30 days, you should again come back to the same thing. So in class or through notes or through whatever book you are studying, आपने जो पढ़ा है उसे 2 दिन के अंदर रिवाइज करो, उसे 7 दिन में भी रिवाइज करो, उसे 30 days में भी रिवाइज करो, and then there should be a 3 monthly and 6 monthly cycle also. ये रिवीजन वाला पार्ट आपको डालना पड़ेगा, else you'll keep reading new things and you'll keep lagging behind. Then वीकली कंसोलिडेशन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यार whatever you're studying in the entire week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, whatever you have done, प्लीज मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ द वीक आप आके एक बार वो सारी चीजों को पढ़ रहे हो. जो ये 7 days का रिवीजन वाला कंपोनेंट है ना, दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग हियर. आइडिया इज दिस कि व्हेन यू गो फॉर दिस in 7 days, on 7th day I'll just go through the entire thing, you'll find all the loopholes and you'll be able to fix it. Without it, it becomes a challenge. And ऐसे ही monthly test में you should be doing this month, you should be taking 1 or 2 days का break, and the whole the purpose should be not reading anything new. The purpose should be revising everything that you have done in the last 1 month. So when you will keep doing this, you'll attend classes or you'll read books, like whatever mechanism you may follow. You will do revision every 2 days. You will do revision every 7 days. When you do revision every 30 days, when you do revision every 90 days, I should have also included quarterly revision, half yearly revision here. When you do this, you will see that whatever you have studied in 6 months, that is staying with you. अगर आप revision को include नहीं करोगे, तो your preparation would be problematic. Similarly, tests are crucial. When you are revising, how do you know whether you are doing good enough or not? In your plan, you should also have tests. Tests में like when the first day के बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो सेकंड डे को, there you may just do the MCQs कि जो आपने पढ़ा है उससे, there you may just do the PYQs कि जो आपने पढ़ा है उससे PYQs आंसर हो रहे हैं कि नहीं. At the end of the week you should be able to attempt some tests, some objective tests, some subjective tests. तो जब आपने रिवीजन कर लिया, वीकली रिवीजन कर लिया, at that time you should be writing some test. Then monthly you should be writing full test every month, ensuring कि you are getting into the groove. Full test for both objective as well as subjective. जो प्रीलिम्स वाला फेज आएगा, जैसे you people are preparing for 2027 and January to April 2027, वो 4 months you'll be dedicating for prelims. At that time you have to ensure कि 30 to 40 tests you are giving. That is, in 120 days 30 to 40 tests means every third day you are giving a test. Similarly, जब मेंस का स्प्रिंट वाला फेज आएगा, that is June, July, August 2027, there every weekend you have to write 2 full length tests, one for GS, one for optional. So testing system should also be part of the plan. Now practice layer, like every day you, एक बार आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, and when you come for its second revision, please ensure that you're writing answers, you're practicing MCQs associated with that. And finally you have to rest and recover. आपका प्लान ऐसा भी होना चाहिए कि every week, half day, like let's say you decide कि Sunday को you'll be writing test, and after that for half day you're not going to study for civil services examination. You will do whatever you like doing. You'll do things which helps you release happy hormones in your body. Now some of you may like running, some of you may just like sleeping, some of you may be
just interested in reading some book not related to civil services, बस read करना है. Some of you may just be चलो movie देख के आ जाते हैं, some of you may be चलो shopping करके आ जाते हैं, some of you may be कि कुछ नहीं करेंगे, बस बालकनी में बैठेंगे, कॉफी पिएंगे और शांति से बैठेंगे. जो भी चाहिए वो आपको अपने शेड्यूल में डालना पड़ेगा. नहीं तो ये जो नेक्स्ट 22 मंथ्स का साइकिल है ना, which is taking you to August 2027 मेंस एग्जामिनेशन, वहां तक जाते जाते आप बीच में रुक जाओगे. You will not be able to consistently in a disciplined manner work and reach there. So it's important that you're taking breaks, and my recommendation is every week half day का break is important, is crucial. अब आते हैं what are the things that have to be avoided. तो एक होता है perfect chart problem. Perfect chart problem is यार कि sometimes I see students making this kind of schedule. I'll get up at 6 in the morning, then from 6:30 to 8:30 I will study. Then I'll take a breakfast break, and then from 8:30 to 10:30 I'll study. Then I'll take 15 minutes का break. Then from 10:45 to 1:45 I'll study. या ये सब नहीं होता है. This is not viable. This is not feasible, and this kind of plan breaks on the first day only, and then you go into that guilt कि I'm not doing my best, and this guilt further worsens your preparation, it harms your preparation. तो यार one thing that you have to avoid is कि very strict, very perfect chart. यार ideally अगर भगवान बैठे होते तो कैसे पढ़ रहे होते, भगवान ऐसे पढ़ रहे होते तो मैं भी ऐसे पढ़ूंगा. नहीं. Behave like a human, be realistic. All those stories where people say they have been studying for 16 hours a day, सब बकवास है. कोई एक आधा exception होगा. In reality it's not possible. Human brain is not made like that. People can work for 16 hours a day, but उसमें दिमाग कितनी देर तक यूज करेंगे वो अलग चीज होती है. पढ़ाई आप 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हो. 10-12 घंटे बहुत है यार. मतलब if you are able to study for 12 hours a day, you are amongst 0.01% people on earth. आप सबने प्लान किया होगा, बट पूरा नहीं होता है. And that is why very rigid, very perfect kind of plan does not work. We have to be careful about it. Similarly, दूसरा सब्जेक्ट होता है 3-4 GS subjects in a day, जो मैंने आपको पहले भी बताया. This is something that has to be avoided. It will not lead to any retention. It will make you feel tired. You will not understand anything. Avoid it. क्या बोला? Maximum 2 subjects, 1 GS, 1 optional, or if you're bored of a GS, 2 GS, and that's it. If you're not doing optional, then 2 GS. Do it one by one. I have seen some coaching institutes which start like this. एक दिन वो history पढ़ाएंगे, दूसरे दिन geography, तीसरे दिन science, चौथे दिन economy. That's not a good thing. You should ensure that you are in any case not doing more than 2 subjects at a time. That's it. Then आते हैं unrealistic blocks. Unrealistic blocks क्या है कि when you rather than studying for 90 minutes or 2 hours, you make a plan. I'll sit at 9 a.m. and I'll keep studying till 1. ये workable नहीं है. Ignore कर दो. Human body doesn't work like that. Human body needs rest regularly. Okay. Then no revision time. मैंने आपको बताया revision crucial है. Without revision, if you'll keep a plan where revision is not involved, you will fail. Positively. कोई भी बच्चा बिना सिस्टमैटिक रिवीजन के सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर नहीं करता है, इसको मान जाओ. अगर आपने हर दूसरे दिन रिवीजन का प्लान, हर 7वें दिन रिवीजन का प्लान, हर महीने रिवीजन का प्लान नहीं रखा हुआ है, यू विल कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, एंड इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, यू विल नॉट बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. फिर copy pasting the topper's timetable. ये भी मैंने आपको समझाया. ये we're summarizing all that thing कि copy pasting doesn't work. Your background, your constraints, your mindset is different from the other person's situation. You cannot just copy paste it. Your timetable has to be as per your plan, and please give time buffer for real life. That is, आप ये मत प्लान करना कि दिवाली में घर ही नहीं जा रहे हैं. नहीं, दिवाली में 2-3 दिन का ब्रेक लेना है. घर में फंक्शन है, उसमें 2-3 दिन का ब्रेक, बहुत लंबा नहीं, बट उन सब में जाना है. when you plan for a 2-year preparation, you're planning for 2027 exam. For 2 years, you cannot just completely close
everything and block yourself. आपको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगा, आपको फिजिकल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम होगा, ये नहीं करना है. तो these are some of the pitfalls that I want you to avoid. फिर not getting any guidance also sometimes become a problem. Not having any accountability, no one asking you. कई बार मैंने देखा है ये ना, this is a problem with the best of the students. मैंने generally देखा है people who have graduated from IITs or people who have graduated from good medical colleges, उनके केस में क्या होता है ना, they feel like मैं खुद से कर लूंगा सब. And because they are so adamant कि मैं खुद से कर लूंगा, they don't seek a mentor. And when they don't seek a mentor, they are not able to correct themselves. Plus, there is a lack of accountability. कैसे? Who is asking you whether you are on schedule or not? Who is asking you whether you are doing your test in a timely manner or not? And this becomes a problem. तो जो best of the students हैं, उनके साथ भी ये issue होता है. देखो, preparing for IIT JEE was different, preparing for NEET was different, preparing for CAT was different. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वैसा नहीं होता है. यहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना जरूरी होता है, और उसके लिए क्या जरूरी होता है? उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है कि यार आई हैव टू फिनिश दीज टारगेट्स एंड देयर इज समवन हु इज लुकिंग एट इट, एंड तो मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा. आई हैव टू, इन केस आई फेस सम प्रॉब्लम, आई विल गो एंड सीक सम मेंटर हु विल बी एबल टू गाइड मी, रादर देन कि नहीं मैं तो अब एकदम IIT बॉम्बे से हूँ, IIT दिल्ली से हूँ और मैं टॉप 100 रैंकर हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है. ये एटीट्यूड लीड्स टू प्रॉब्लम्स. ये एटीट्यूड लीड्स टू दीस पीपल फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज इन देयर प्रिपरेशन. ये बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेने चाहिए, बट दे आल्सो टेक 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts टू करेक्ट the mistakes that they have done. They feel like यार हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, we are very hard working from our childhood, we are studying for 10-12 hours, but if you don't have proper mentoring, if you don't have someone who can guide you who can guide you, यार ये book suitable नहीं है, ये वाली कर ले, या if there is no accountability, the best of the students will also get diverted, and वो ठीक होने में फिर कई बार कई साल लग जाते हैं, and even after that students don't get selected. फिर अब हम आते हैं कि 20 मंथ्स का ब्लूप्रिंट अपना 22 मंथ्स का ब्लूप्रिंट होना कैसे चाहिए. देखो, अगर आप नवंबर में यहां हो एंड योर मेंस इज इन अगस्त 2027, वी हैव अराउंड 21 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट, 22 मंथ्स भी नहीं है. इसमें what should be the rough plan that we should have? Please note, I'm talking about students who are preparing for 2027. I'm not talking to students who are preparing for 2026 examination. So agar if you are preparing for 2026 examination, please skip the video. I want to give a plan for students who are preparing for 2027 examination. पहली चीज से शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या करना है? देखो यार, फेज 1 नवंबर से जून, जो ये 8 महीने का फेज है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां पे आई वांट यू टू प्रायोरिटाइज योर जीएस बेसिक्स, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट. ये जो बेसिक जीएस के सब्जेक्ट है, इनको प्रायोरिटाइज करना है. आपको रोज न्यूज़पेपर करना है, आपको वीकली टेस्ट देने हैं, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. और यहां पे वो रिवीजन वाला लूप भी लेके आ रहा है. रिवीजन वाला लूप मतलब either every day at home, like every day after you are done with a class or done with a chapter, you are revising. At the weekend you are revising, and in 30 days you are revising, in 90 days you are revising. But let us dedicate these 8 months for GS. अभी ऑप्शनल शुरू नहीं करेंगे. अभी हम प्राइमरली जीएस में ऑब्जेक्टिव्स, जीएस में सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हैं. और जीएस में भी अगर इफ इट्स अ लॉट ऑफ वर्कलोड, skip those portions which are only needed for mains, जैसे world history is not needed for prelims, और governance, social justice, they may not be needed for prelims. इन सबको आप सेकेंड फेज के लिए रख सकते हो. बट यहां पे ना, बी सो स्ट्रॉन्ग इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, दैट नो मैटर व्हाट, आप इसके सारे मेंस के सारे प्रीलिम्स, साइंस, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आप इसके सारे प्रीलिम्स के सारे मेंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिख पा रहे हो. That is one thing that you should be achieving in 8 months. Do not plan for so many things at a time कि मैं ऑप्शनल भी कंप्लीट करूंगा, जीएस भी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हम सेकेंड फेज में we will go for optional. यहां पे आप देखोगे from June 2025 to December 2025, ये जो 6-7 months का पीरियड है, यहां पे primarily what we'll be doing optional. So do we not do GS here? No, we will do GS. GS के मेंस वाले जो एरियाज है, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, वो करेंगे. प्लस
we will keep revising whatever we have done in first phase. We'll keep doing that so that by end of December अपना goal ये होना चाहिए कि we are completely ready for mains. If someone gives you a mains paper, you should be like, मुझे दे दो, मैं करने को ready हूं, मुझे आता है. Okay, I'll take a lot of you are have started asking doubts. I'll take doubts at the end. I'll take all the questions at the end. Let me quickly go to the timetable wala portion. Okay, this is for 2027. I'm taking this session for 2027 examination, not for 2026. तो जो बच्चे 2026 वाले please ये attend मत करिए, ये उनके लिए नहीं है. Okay, तो coming back to देखो first 8 months में GS को prepare करना है. GS में क्या? History, Geography, Polity, Economy, Science, Environment. प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए और एथिक्स भी ये अपने बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं. प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी पूरा कंप्लीट करना है. सेकंड फेज में वी आर डेडिकेटिंग 6-7 मंथ्स कंप्लीटली टू ऑप्शनल. थोड़ा सा टाइम निकाल के, बिकॉज ऑप्शनल के लिए यू विल नॉट नीड द एंटायर टाइम, थोड़ा सा टाइम निकाल के जो मेंस वाले एरियाज अपने रह गए होंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एथिक्स, यहाँ एथिक्स इफ पॉसिबल फर्स्ट फेज में ही कर लेंगे. वी शुड बी डूइंग here and we should continue to revise whatever we have done in the first phase. तो ideal goal क्या होना चाहिए कि यार we'll study in such a manner that by December, I'm sorry, ये ना मेरे लिए होना चाहिए था June 2026, June 2026 to December 2026. Ideal goal should be June 2026 से December 2026 तक. Yes, I'm sorry, that was my mistake. June 2026 से December 2026 तक we should be focused on mains, we should be preparing for mains. हम first phase वाला revision करते रहेंगे and that is why we will keep writing some objective tests also. We will keep writing weekends पे objective test by revising the first phase वाला thing and we'll keep doing some mains preparation also. But यहाँ पे what is the focus of this phase? Our focus of this phase is at the end of December. Each and everything in the syllabus for mains examination for both optional for GS is done. We have written all the PYQs, we have practiced them, we feel like we are ready for mains examination. Now in the third phase, that is January 2007 to April 2027, this is our prelims triumph phase. यहाँ पे देखो आपने prelims के लिए preparation already कर लिया है first phase में, है ना? आपने नवंबर 2025 से जून 2026 तक प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन किया था, फिर जून से दिसंबर तक उसे रिवाइज भी किया था. We had not completely ignored it. So now you're fully prepared for prelims. What you will do is you will revise and you will update current affairs if any related to preliminary examination, because अभी तक आप मेंस पे फोकस कर रहे थे. That's what you should be doing. Then you should be revising all the PYQs for prelims. You should be attempting 50-minute test. So in these 4 months, if you are attempting 50-minute test every third day, you are attempting a 50 question का test every weekend. पांच month है, Jan, Feb, March, April, May. Every Sunday you should be attempting a full length test. And अगर if you're able to do all this and your prelims preparation is going well, what you should be doing, you should also do some mild mains revision, because हम mains में इतना ज्यादा gap नहीं देंगे, है ना? You should continue to do some mild mains revision. Goal क्या है? We should be qualifying preliminary examination with comfortable margin. अगर हम आज शुरू कर रहे हैं, if we are starting in November 2025, we should not be कि यार बस border पे prelims clear कर रहे हैं. We should be like कट ऑफ से 10-15 नंबर ज्यादा है, क्योंकि हमें टेंशन लेनी ही नहीं है कि मेंस में मैं बॉर्डर बाउंड्री पे रहूंगा ही नहीं. जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, माय स्कोर शुड बी 20 मार्क्स मोर देन दैट. वी शुड बी दिस वेल प्रिपेयर्ड, एंड फॉर दिस these are the things that we'll do. And if you'll keep doing well in the objective test, you will keep attempting some mains. You'll keep doing some mains revision. CSAT में आता हूँ. I'll talk about CSAT. I'll talk about देखो यहाँ पे current affairs हम कर रहे हैं ना. CA updates is current affairs only. Okay. Then we come to the last phase. देखो अब आपने दिसंबर तक mains ready हो गए थे. From, if you remember, June 2026 to December 2026, in the second phase, we had focused completely on mains. We had become ready for mains. We had written a lot of tests. Ab na, in the third phase, which was prelims phase, we had done some mild revision. Not full-fledged revision, some mild revision for mains was going on if we were doing well in prelims tests. Now comes the mains victory phase. Yahan pe you will revise, not a lot of new things to study.
You will revise, you will do advanced CA updates for mains. Because in this period when you are preparing for prelims, some more current affairs may have happened, you will do that. Then daily you should be doing answer writing between June, July wala period, August mein you'll have your mains. A test series should be there for both GS and optional. Every Sunday you should write one GS test and one optional test in this period and continue your revision. Revision. जो भी पढ़ा है आज तक उसको रिवाइज करते रहो, ensuring that you are able to score very well in GS, very well in optional. And यहां पे भी ना ऐसा नहीं कि यार after exam you feel like, oh, this was my trial attempt. After exam you should be like, I've given my best, I revised everything, I have attempted all the questions, and most probably I'm getting selected. You should have this feeling, and it would be possible if you are planning properly. Now let's come to daily plan. Like today's session, मुझे मेरी टीम ने बोला कि मुझे आज सेशन डेली प्लान पे लेना था कि डेली प्लान कैसा होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे ना there are people who are in college or who are working aspirants. So for them I have a plan. I'm calling it Model A. Model A is for what? Model A is for students who are working. Model A is for students who are for aspirants who are working or aspirants who are still in college and they're preparing for 2027 examination. देखो, I'm assuming you have 5 to 6 hours in a day, not more than that, perhaps 5 hours in a day. अब इसमें ना देखो, if you remember the first phase, अपना phase 1 क्या था? अपना phase 1 was from November to June. तो our phase 1 was from November 2025 to June 2025. This is our phase 1. Phase 1 में what you should be doing? You should be doing GS for 3 hours. जिसमें आप GS classes करिए, कोई भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से करिए, जीएस की क्लासेस करिए, जीएस आप खुद से पढ़ना चाहते हैं खुद से करिए, एंड रीड द नोट्स या रीड द बुक प्रॉपरली. जनरली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे जीएस प्रोग्राम का पार्ट है जो 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल अटेंड क्लासेस एंड यू विल रीड योर नोट्स. आपको हर क्लास के साथ क्लास के हैंडआउट्स भी मिलेंगे, यू रीड देम. Second thing that you have to do is for 1 hour you will revise all these things. पहला आपने क्या किया, क्लास अटेंड करी, अपने नोट्स रीड किए. दूसरा आपने रिवीजन किया. Every day 1 hour should go for revision. Every day 45 minutes should be going for reading newspaper. 1 hour for solving PYQs. PYQs can be for prelims and can be for mains. This is something that you have to do. Are we getting it? तो November 2025 to June 2025 में this is roughly the plan. And on Sundays what you should be doing, ये एक सेकंड दीजिए मुझे. हाँ, on Sunday at the end of the week revision for the whole week. And if you are weak in CSAT, 2 hours of CSAT also. CSAT को मैंने skip नहीं किया है. If you are someone who's weak in mathematics, who feels कि यार CSAT is going to be a trouble for me, start now. Every Sunday spend 2 hours, 3 hours on CSAT. And if you are really pathetic, Sunday को 2-3 घंटे तो दो ही. Every day start giving half an hour on solving some maths वाले questions. नहीं solve कर पा रहे हो, उसका solution देख के solve करो, but keep doing it. देखो, CSAT or aptitude is not learned, it is developed, and it will be developed with a lot of practice. So start doing CSAT from the beginning only. In case you are weak at it, if you are good at it, don't worry about it right now. So in the first phase, this is what we'll do. In second phase, ये थोड़ा सा modify होगा. If you are a working aspirant, you only have 5 hours. In the second phase, यहाँ पे if I take you to second phase, let me call it phase 2. Now phase 2 कब होगा? Phase 2 will be from July 2026, June, July 2026 to December 2026. What will you do? Monday to Friday, you will follow this. But यहाँ पे GS classes की बजाय, you will have optional. Because in phase 2, what were we prioritizing? We were prioritizing optional. Right? Phase 2 में
do optional 1 hour, to attend optional classes, read its notes, then do revision. This took 4 hours. Another 45 minutes for reading newspaper. Your newspaper reading should continue if possible. अब आपके क्योंकि basic GS notes बन गए, उन topics पे if in newspaper something new is coming, keep on adding it there. And यहाँ पे in this phase you will solve mains questions. जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हो देखो उससे अगर PYQ है तो कर लो, देखो if you are able to answer it or not. Now you will say कि sir what about GS mains? देखो GS mains basic subjects तो हमारे हो गए फर्स्ट फेज में. This you should do from Monday to Friday. तो working aspirants या college going aspirants Monday to Friday you in the second phase you focus on optional and on Saturday Sunday focus on GS. GS में जो मेंस वाले छोटे छोटे वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन रह जाएगा, गवर्नेंस सोशल जस्टिस का रह जाएगा, you focus on that. So by end of December you are prepared for mains. आपने जीएस के भी मेंस वाले एरिया भी कर लिए हैं और थोड़ा सा रिवीजन करते हुए you are also done with prelims. You are also done with the basic subjects. Okay, now after this comes phase 3. phase 3 में हम पूरा prelims पे फोकस कर रहे थे. That will be phase 3 will be from what? From January 2027 to April 2027. phase 3 will be this 3 hours GS classes नहीं, revision. आपने already सब पढ़ लिया है ना. 1 hour any CA update which is needed, go for that. 1 hour any CA update that is needed and then read newspaper, solve MCQs, or at the end of the week give full length test. Revise for ये आपका phase 3 is what? Prelims victory phase. Yeah, a phase where you are winning over the preliminary examination. Working aspirant ho, I'm assuming 5-6 hours hai, you do not have more than that. And similarly after mains the similar amount of time should be going for mains. But after mains now my recommendation would be for everyone, mains wala phase, that is June 2027 say August 2027. Let me write it again. June 2027 say August 2027. I think even the working aspirants or college going aspirants, they should be like ये period मेरे पास full time preparation के लिए available होना चाहिए. If you do not have this period for full time available for full time preparation, problem होगा, because mains के time you will have to revise both GS and optional. Though you have completed GS and optional, but here you have to revise GS for 3 to 4 hours, optional for 3 to 4 hours, and then on the weekend on Sunday you have to give 2 tests, one GS का, one optional का. And इसके लिए my recommendation would be कि यार यहाँ पे take a sabbatical from your job, आप medical leave लो, कुछ भी करो, या and ensure if you're in college, please ensure that by May-June 2027 your college is getting over so that you have full 2 months to prepare, 2-3 months to prepare, revise for mains. I would not say prepare for mains, to revise for mains. तो ये यहाँ पे भी like this part will be same for working as well as full-time aspirants, because between pre and mains I want full dedication, not superficial things, not part-time things. Pre और mains के बीच का जो phase है, mains preparation should be full-time, it should not be part-time. Okay, now let's talk about model B, which is for full-time aspirants, people who are preparing full-time. आप भी ना अपना एक plan बनाओ, जैसे you'll have 3 hours of GS classes plus time given for reading notes, you'll have 2 hours for revision, you spend more time on revision. आपके पास time ज्यादा है, आप अच्छे से रिवाइज करो, जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है पढ़ो. 1 hour for reading newspaper, 1 hour for solving PYQs. PYQs can be objective or subjective, and 1 hour. Now please note this method is
slightly different from the method of people who are working or who are in college. इससे पहले we had discussed plan for them. Here, in the first phase only, first phase is what? November 2026 to November 2025 to June 2026. In the first phase only, you start reading some standard books of optional. जैसे आपका जो भी ऑप्शनल हो उसकी जो सबसे स्टैंडर्ड किताबें कौन कौन सी है आप उसे लेके रीड करना शुरू करिए, सो दैट इन जून व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल you would have some understanding, है ना. Start doing it. Working aspirants or college going students who do not have full time, who do not have more than 5-6 hours will not be able to do it and don't do it. But for rest of you, I'll suggest start reading books related to your optional, and Sunday should be for revision of for the whole week and 2 hours of CSAT practice based on the situation. Now यहाँ पे भी ना, this is for phase 1. Phase 1 was for June to sorry phase 1 was from November 2025 से June 2026. Now for same students, अब बात करते हैं students who are preparing full time, right? Students who are preparing full time में phase 2, full time preparation वाले students का phase 2. Phase 2 is what? Phase 2 is जून जुलाई से दिसंबर 2026. June 2026 से December 2026. What should you be doing here? Prioritize optional. Optional में what? 5 to 6 hours you should be giving to optionals daily. 3 hours of classes, 2-3 hours of revision, answer writing extra, etc. And in the remaining 3 hours, GS के जो भी pending topics रहे होंगे, it may be world history, it may be society, it may be all these mains related topic. This should be done in 3 hours and keep last 1 hour for revision and so on. आपको ये करना है ना. In fact, I would say एक और, because you have whole time available, you should be able to study 8 to 10 hours. So what you should be doing, you should also be taking out some time, perhaps every Saturday or Sunday, to revise the phase 1. Phase 1 में आपने GS almost पूरा complete कर लिया है. Other than some small area that you are doing in phase 1, in phase 2, phase 1 में आपने GS complete कर लिया है, GS को revise करते रहिए. फिर इन्हीं बच्चों के लिए what will be there? Phase. So here what we have to ensure is by end of December, by this time, you are mains ready. Once you are mains ready, prelims preparation would be simple. Prelims preparation would be easy. Okay, I'll take all the doubts. Sipti, I'll take this doubt key, which newspaper is suitable. I'll come to that, but let me first give you a broader idea, बच्चा. सबके लिए ना क्या plan होना चाहिए. So if you'll be full-time aspirant, June 2026 to December 2026 should look like this, and आपका Triumph prelims phase भी आएगा. Triumph prelims phase will be from January 2027 to April 2027. यहां पे क्या करना है? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है. रिवाइज योर नोट्स. आपके पास ऑलरेडी सब कुछ रेडी है. यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. व्हाट एल्स डू यू डू? एड करंट अफेयर्स. इन मेंस फेज यू मे नॉट हैव फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रह गया होगा. एड दैट. डू PYQs. अगेन PYQs आपने पहले फर्स्ट फेज में कर लिए होंगे, बट रिवाइज देम अगेन. देन 50 मिनी टेस्ट्स. every 2 days give a test of 50 question. So I'm calling it 50 mini tests, and then every weekend 100 question का full length test plus CSAT का भी test. This is what you should be doing. And mains phase, last वाला जो June 2027 to August 2027, that's going to be same. Like as I've said, the working aspirants also should plan that in this phase they should have full-time preparation ka option, and the non-working ones should also have full-time preparation ka option. So here things should not change. Here things will be same as I discussed for the previous students. Okay, so this is what the 4 phases for
the model B, that is for people who are preparing full time. In fact, if you look at, I'll come to this part, but if you look at the GS Foundation program at LevelUp IAS, हमने भी इसे ऐसे ही प्लान किया है. What we are doing is November 2026 से जून 2026 तक, सॉरी नवंबर 2025 से November 2025 to June 2026 तक, we are focusing on fundamental areas: history, geography, polity, economy, ethics, science tech, environment, biodiversity and climate change, disaster management. Idea क्या है? You should be done for both prelims and mains of these things. In the GS Foundation program at LevelUp IAS, in phase 1 यही कर रहे हैं हम. phase 2 में क्या करेंगे? phase 2 में, और यहाँ पे देखो, every Sunday will be taking your objective test, every Sunday will be taking your subjective test, every month you'll have monthly test, every 3 month you'll have quarterly test, 6 monthly test. तो जो वो revision का plan है ना, जो मैंने आपको suggest किया है, that is integrated in here, that will be done as part of this course only. अगर आप हमें follow करोगे, whatever I've suggested you, we have already integrated all of that in our GS Foundation course. Similarly, in this program only, if I go into second phase, June to December 2026, we are asking students to focus more on their optional, and GS part में only limited things, only limited GS things have to be done, and there will be more focus on revising GS. Because GS हम substantially first part में ही कर लेंगे, first phase में ही कर लेंगे. There is more focus on revising GS so that by end of December 2026 you are fully prepared for mains. फिर in the third phase, in the LevelUp's GS Foundation program, in the third phase, that is from Jan 2027 to April 2027, we will take you through revision. We will make you solve 50 mini tests. जो भी जरूरत है preparation के लिए, we will do that. We will make you solve 20 full length tests. इसके अलावा will also recommend you, आप बाकी सारे institutions के भी open test, जो open test वो सबके लिए open करते हैं, वो attempt करो, so that you get a feel of every kind of test which is being prepared, and in the end will make you solve 500 questions for each subject. जैसे जब in April you will feel like, now sir, I'm fully prepared for pre, my notes I've done, I've revised it, I've done current affairs updates, I'm doing mini tests, तो mini test भी हो रहे हैं मेरे सारे, मैंने full length test भी कर लिया, मैंने PYQs भी कर लिए, now I'm fully done. Will say, चलो आ जाओ, एक ही दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक हमारा इनिशिएटिव होता है रिवाइज थ्रू 500 क्वेश्चन, वेयर इन वन डे वी विल सॉल्व 500 क्वेश्चन, विल अगेन हेल्प यू रिवाइज द होल सिलेबस इन अ वेरी फास्ट ट्रैक मैनर. और ये इसके बाद फोर्थ फेज आएगा व्हिच विल बी फॉर मेंस, वेयर वी मेक स्टूडेंट्स राइट मेंस टेस्ट सीरीज. मतलब जो भी सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए ना, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट. टेस्ट सीरीज, मिनी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, essay, CSAT, current affairs, everything is part of the program. We have made a plan which would ensure कि कोई भी बच्चा अगर 5-6 hours dedicatedly हमें दे रहा है, हम उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे, प्लस ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा और एफर्ट देना पड़ेगा. तो बिकॉज वी डोंट हैव ऑल द ऑप्शंस, सो आई कैन नॉट promise you all the options, but for a few optionals, जैसे when we talk about sociology, when we talk about anthropology, when we talk about history, the best teachers in the country are at LevelUp IAS. सबसे ज्यादा सिलेक्शंस इन सब्जेक्ट्स में कहां से होंगे? LevelUp IAS से होंगे. ये 2025 का रिजल्ट आएगा तब भी आप देखेंगे, और
फ्यूचर में भी आप देखेंगे इन सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर्स हमारे पास है, जीएस की बेस्ट टीम हमारे पास है. वी विल मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज. यू आर ऑलवेज आस्क्ड कि भाई तुम्हारा सेकंड डे का रिवीजन हुआ कि नहीं, तुम्हारा सेवंथ डे का रिवीजन हुआ कि नहीं. यू विल बी आस्क्ड कि यार 30 डे हो गए, नाउ 30 डे का फुल लेंथ टेस्ट है. वी विल प्लान अकॉर्डिंगली. चलो ये तो हो गया. नाउ एट द एंड, बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस, एट द एंड आई हैव दिस कि यार देयर आर सम थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड. जब देखो ये टाइम टेबल बनाने की बात हो रही थी, टाइम टेबल शुड बी सच दैट यू हैव फिक्स्ड sleep wake times. That is, you should not do this. किसी दिन आप 3 बजे सो रहे हो, किसी दिन 12 बजे सो रहे हो, किसी दिन 9 बजे सो रहे हो. That's not a good thing. 45 minutes of exercise daily is compulsory. Weekly half day off is compulsory. Without it, it will not be sustainable. Don't do more than 2 subjects in a day. 1 GS, 1 optional, or 2 GS subjects, not more than that. Family college के लिए buffer रखना पड़ेगा. There should be digital detox hours. Like there should be time when you should be like, मैं लैपटॉप फोन सबसे एकदम दूर बैठा हूं, जहां पे जस्ट यू फ्रॉम योर हार्ड कॉपी यू आर रिवाइजिंग, यू आर अंडरलाइनिंग थिंग्स. कोई डाउट है तो सर्कल करके छोड़ दो. वी हैव अ हैबिट, कोई भी डाउट होता है हम झट से कहां जाते हैं, मोबाइल फोन खोल रहे होते हैं. नहीं करना है वो. तो देयर शुड बी डिजिटल डिटॉक्स आवर. एंड सीए बैकलॉग डे भी हो रहा है. सीए बैकलॉग डे या करंट अफेयर्स बैकलॉग डे का मतलब क्या है कि यार every day we have to spend 40-45 minutes in current affairs, but due to some reason if you have missed it, then maybe on Sunday you can keep 2-3 hours कि यार जो भी current affairs छूटा है मैं एक बार उसे रिवाइज करूंगा. वैसे भी if you'll be studying with LevelUp IAS, if you'll be doing your GS foundation course with us, we will make sure that आपका current affairs is also integrated within the plan only. And I'm the current affairs teacher at LevelUp IAS. I'll make sure that जितना भी relevant current affairs है वो आपके कोर्स का पार्ट रहे और आप उसके साथ स्ट्रीमलाइन तरीके से उसे कर पाए. Now तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको एक रफ प्लान का आइडिया मिल गया है. थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो मैं जल्दी जल्दी आपके डाउट्स ले लेता हूं. मैं ऊपर से शुरू करूंगा. आपने अगर पहले डाउट्स लिखे हुए हैं तो डोंट राइट इट अगेन. आई विल टेक डाउट्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग सो दैट वी डोंट मिस एनी ऑफ द डाउट्स. हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यू, संजय बोल रहे हैं. संजय बेटा देखो पीवाईक्यू एनालिसिस का क्या होता है ना, वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट, लेट्स से यू आर डन विद हड़प्पन सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री. अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, या मान लो आपने क्लास में पढ़ा, आपने कोई एक स्टैंडर्ड बुक भी रीड कर ली. नाउ यू फील कि हाँ माय प्रिपरेशन इज डन. पहले पीवाई को एनालाइज नहीं करो, पहले पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो कि क्या आप पीवाईक्यू कर पा रहे हो. अगर नहीं कर पा रहे तो द पीवाईक्यूज दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर, गो बैक टू योर नोट्स, ऐड सम पॉइंट्स देयर सो दैट पीवाईक्यू इज आंसरेबल. इससे पहले तो आपके नोट्स कैसे बने, आपके नोट्स ऐसे बने जिससे सारे पीवाईक्यूज आंसर हो जाते हैं. ठीक है. वंस दिस इज डन एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट बेटर, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक दो बार पढ़ने के बाद यू हैव नॉट understood it in a manner in which a person who has studied it 20 times would be able to understand, right? तो जब आपने 2-3 बार पढ़ लिया है, आपने सारे PYQs प्रैक्टिस कर लिए, then see a pattern. तो उसके बाद ना you'll be able to see a pattern कि यार हड़प्पा के ना सिटी प्लानिंग से सवाल आ रहे हैं, हड़प्पा के आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल आ रहे हैं, बट हड़प्पा की पॉलिटी से बहुत सवाल नहीं आ रहा प्री में. तो प्री में मैं हड़प्पा की पॉलिटी पे बहुत ध्यान नहीं दूंगा. अच्छा मेंस में आ रहा है तो मेंस में मैं हड़प्पा की पॉलिटी पे ध्यान दूंगा. तो ये ना हाउ टू एनालाइज इट विल कम एज यू कीप प्रिपेयरिंग, यू विल बी एबल टू सी पैटर्न. जैसे I'll tell you, मैं एनवायरमेंट टीचर हूं तो I'll tell you about that. जब मैंने एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज पोल्यूशन वाले एनालाइज किए, आई सॉ दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पोल्यूशन रिलेटेड आर कमिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. बहुत कम क्वेश्चन है जो उसके बियॉन्ड आए हैं. प्लास्टिक से बहुत कम आया है, ई वेस्ट से बहुत कम आया है. तो पढ़ाते टाइम या पढ़ते टाइम भी ना फोकस एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन पे बहुत रहता है. जैसे रिवर पोल्यूशन पे 2-3 बार सवाल आ गए, ग्राउंड वाटर इश्यूज पे 2-3 बार सवाल आ गए हैं, वाटर सिक्योरिटी पे 2-3 बार सवाल आ गए हैं, ऐसे आए हैं. तो हाउ टू एनालाइज इट, इट विल कम इनटू प्ले वंस यू हैव, अभी आप अभी प्रिपरेशन ना शुरू कर रहे हो. तो अभी rather than analyzing PYQs you should focus on what? Completing PYQs. क्या मैं सारे PYQs आंसर कर पा रहा हूं, मेरी इतनी नॉलेज तो हो गई है ना. वंस आप वो सारे आंसर कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, आपका सिलेबस पूरा हो गया है, देन यू कैन फाइंड सम पैटर्न एंड डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन संजय. नाउ सीसैट देखो, सीसैट किशोर देखो, इफ यू आर पार्ट ऑफ हमारे जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम के पार्ट हो तो हम उसमें सीसैट आपके फाउंडेशनल फेज में ही
कंप्लीट करते हैं। अगर नहीं भी हो तो it depends on your preparation level. Like if you're very comfortable with it, don't worry about it till October 2026. तब तक आप अपना बाकी फाउंडेशनल प्रिपरेशन करो. If you are someone who's डाउटफुल कि यार मेरा सीसैट होगा या नहीं, तो मैंने अभी बोला ना, अभी से ही October 2026 से we will start giving time to it dedicatedly, but अभी से every weekend start giving it 2 hours and every day start giving it 15 minutes or 30 minutes to solve some maths वाले questions. Sir, how to master answer writing like Archit Dongre? यार पता है ये ना पूरा प्रोसेस होता है. On day one, if you'll ask me, सर मुझे बता दो कि how did अर्चित डोंगरे get All India Rank 3? पता है अर्चित डोंगरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो हमारे यहाँ जेएस फाउंडेशन नहीं कर रहे थे, कहीं और कर रहे थे, उनका प्री भी नहीं क्लियर हुआ था. सेकेंड अटेम्प्ट में he came to us, then he became an IPS. थर्ड अटेम्प्ट में he again attempted the exam and he was again doing one of our courses, mains masters program, and he got All India Rank 3. तो ना अर्चित डोंगरे की तरह या किसी भी और बच्चे की तरह आंसर राइटिंग डेवलप करने का ना वो एक साइकिल था. वो यू वोंट गेट हेयर. नो टीचर कैन टेल यू कैसे ये 5 स्टेप्स कर लो हो जाएंगे, बट हाउ यू शुड बी डूइंग इट, आई विल टेल यू. पहले ना वॉट एवर यू रीड, एक बार आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, लुक एट पीवाईक्यूज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मेंस वाले एंड राइट इट. आफ्टर राइटिंग इट कम टू मी, मैं उनको देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा देखो बेटा इसमें ये इंप्रूव कर सकते हो, इसमें ये, बिकॉज Archit had some other problems in his answers. You will have some other problems in your answer. है ना? तो to reach good quality answer, he may had to do something else. He had engineering background, उसको लिखने का अता पता ही नहीं था यार. You may have arts background, you are writing well, and the changes in your answer, the changes which are required in your answer may be different. राइट तो अर्चित डोंगरे की तरह आंसर कैसे लिखना है, या प्रीति कुमारी की तरह आंसर कैसे लिखना है, सौम्या मिश्रा की तरह आंसर कैसे लिखना है, या ऑल इंडिया रैंक 1 की तरह आंसर कैसे लिखना है, नहीं. आप अपना आंसर लिखना शुरू करिए. सिट विद मी, I'll also be in GS Foundation program. I'm the super mentor. मैं आपके साथ, मेरा फोन नंबर सबके पास रहता है, सारे बच्चों के पास रहता है, मैं उनसे मिलता हूं. Sit with me. I will go through your papers, will give you feedback. You'll also get dedicated individual mentors who will be who will be personally guiding you. They will make sure कि आप स्ट्रीमलाइंड हो और आपके आंसर्स में जो भी लिमिटेशन है वो इंप्रूव हो रही है. अब जैसे अर्चित ने अपने आंसर्स को थोड़ा इंप्रूव करके यहां पहुंचा था, आप भी जो भी आपके लिमिटेशंस में भी समथिंग एल्स, तो यू डोंट हैव टू चेंज इन योर आंसर्स व्हाट अर्चित हैड टू चेंज. यू मे हैव टू चेंज समथिंग एल्स, बट वो सारी लिमिटेशंस खत्म करके वी विल बी रीचिंग हियर. ओके सर, व्हेन टू स्टार्ट रीडिंग मंथली करंट अफेयर्स? बेटा देखो, इफ यू आर a part of LevelUp IAS foundation course, you don't have to read monthly current affairs. हम अपने कोर्स में इंटीग्रेट करेंगे. If you are not part of LevelUp IAS foundation course, तो नवंबर से जून तक यू रीड न्यूज़पेपर और जून के बाद मंथली करंट अफेयर्स करना शुरू करना. बट इफ यू आर एट लेवलअप, डोंट डू दैट. वी विल नॉट नीड टू डू इट. हम अपने बच्चों को कोई मंथली करंट अफेयर्स इन सब के पीछे जाने को बोलते ही नहीं है. ठीक है. Instead of standard books, I'm doing handouts for optional sociology from निशात सर. हाँ खुशबू, you can do that if you have. देखो अभी तो ना ये सिचुएशन है, सोशियोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड सोर्स निशात सर के नोट्स बन गए हैं. मतलब इस बार आई थिंक 1000 स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी मेंस वर एट LevelUp IAS. 1000 प्लस स्टूडेंट्स वर एट LevelUp IAS. ऑलमोस्ट जो बच्चा सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, जो बच्चा सोशियोलॉजी से सिलेक्ट होगा, LevelUp IAS से सिलेक्ट होगा. सेम इज द केस विद एंथ्रोपोलॉजी. मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन हु वाज राइटिंग मेंस इन एंथ्रोपोलॉजी वाज एट LevelUp IAS. सर, व्हिच न्यूज़पेपर इज बेस्ट फॉर रीडिंग? बेटा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बोथ ऑफ देम आर गुड, चूज वन ऑफ देम. When is sociology optional batch for 2027 starting at LevelUp IAS? Beta, somewhere in April, May, not before that. I too agree with sir for socio. I'm too the student of Nishat sir. His way of teaching is just fabulous. Yes, he's amazing. Sir, can you please explain how to? And ये तो मैंने कर दिया. Sir, if we are taking GS classes where lectures are 3 hours long, then how much time would we spend on self-studying standard books? Also, how and when should we make notes for saving times? Should we refer to toppers notes? And since the economics and module is 3 month long, economics module 3 month long, कौन सा 3 month long economics module है? How should we manage preparation accordingly? बेटा कुछ तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 3 months लॉन्ग नहीं होता है. चलिए मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, मैं थोड़ा बैठ भी जाता हूँ. सर, इफ वी आर टेकिंग जीएस क्लासेस वेयर लेक्चर्स आर 3 hours long, then how much time should we be spending on self studying standard books? बेटा देखो, now it will depend on a lot of things. जैसे ना, if you have a 3 hour long GS class, जैसे
I'll give you my example as a teacher. When I teach environment, I don't, because I cover it very exhaustively, I don't ask students to read anything else. Because एक बार जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा देता हूं ना, तब मैं उनसे बोलता हूं, for their confidence, now go and read any source you want, you won't find anything extra in that. तो प्रिपरेशन अब ना क्लासेस करने के बाद स्टैंडर्ड सोर्स रीड करना है या नहीं, it will depend on institutions, जैसे, or it will depend on teachers. जैसे in my case, when I teach you science environment, I do not recommend you any standard source. या निखिल सर जब आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, ancient medieval culture पढ़ाएंगे, his notes are the best. He has ensured that everything in NCRTs, the standard books, are included in the notes only, so that you have only one source. For polity, you may need to read Lakshmikant and all, but वो भी limited form में. ओके, तो आंसरिंग योर क्वेश्चन की सर कितना टाइम स्टैंडर्ड बुक्स को देना है, इट विल डिपेंड ऑन वेयर आर यू स्टडिंग, विच टीचर आर यू स्टडिंग फ्रॉम. अगर वो सोर्स एग्जॉस्टिव नहीं है तब आपको स्टैंडर्ड बुक को टाइम देना होगा, बट एट लेवल अप वी ट्राई टू मेक सोर्स वेरी वेरी एग्जॉस्टिव सो दैट यू डू नॉट हैव टू रेफर टू एनी अदर सोर्स. नाउ अच्छा, शायन हामिद, if you can also tell me कि whether you are a working aspirant or a full-time aspirant, I'll be able to answer accordingly. Ayush is saying, sir, my job is from 10 a.m. to 7 p.m. It's startup, so workload is also at higher side. How should I manage the timetable in such situation? And in this case, condition, I may not be able to read newspaper on daily basis. Can I rely on your current affairs lectures rather than newspaper? Yes, Ayush, देखो, I'll give you a suggestion. 10 a.m. to 7 p.m. आपका workload है, that's very tiring. Let's say by 10 p.m. at night, so you come back at 7 p.m, have dinner, rest. By 10 p.m. you are like कि चलो अब कर सकते हैं कुछ. तो ना मैं आपको रोज 4 घंटे बस पढ़ने को बोलूंगा, 10 a.m. to 10 p.m. to 2 p.m. और 2 a.m. ये 4 घंटे पढ़ाई करो, बीच में 15 मिनट का स्लीप एट 2:30, एंश्योर 8:39 तक आप उठ गए हो, आप अपने ऑफिस 10 बजे पहुंच जा रहे हो. बस 4 घंटे पढ़ो एंड डोंट टेक टू मेनी थिंग्स एट वन गो. जीएस की एक क्लास से शुरू करना एंड क्लास रिविजन, क्लास रिविजन, क्लास रिविजन, संडे को थोड़ा ज्यादा रिविजन, स्टार्ट लाइक दिस. और कमिंग बैक टू can you rely on my current affairs notes? Yes, you can. My current affairs classes, yes, you can definitely. But मेरा recommendation पता है क्या रहेगा? When you are traveling, do this. ऑल इंडिया रेडियो होता है, ऑल इंडिया रेडियो का चैनल है, वेबसाइट है, वहां पे जाके ना उनका न्यूज एट 9 सुन लेना. न्यूज एट 9 विल बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स का न्यूज. उससे ना दुनिया में चल क्या रहा है उसका ब्रॉड आइडिया यू विल हैव. For exam, what is needed, I'll keep doing in the class. But it's not just about exam. You should, like when you come to class, you should broadly understand कि दुनिया में चल क्या रहा है. And उसके लिए 10-15 minutes while you are traveling, or sometimes when you are sitting in the washroom, तब भी ना earphone लगाओ, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज चलाओ और सुन लो क्या चल रहा है. मोदी जी आज फ्रांस गए, ये मीटिंग हुई. थोड़ा बहुत ब्रॉड आइडिया रखो दुनिया में क्या चल रहा है. बाकी एग्जाम के लिए एवरीथिंग विल डू इन क्लास ओनली, दैट विल बी गुड इनफ. ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन आयुष. सर इंग्लिश वीक है, मैं मराठी से प्रिपेयर कर रही हूँ. ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट. लाइक लेट मी नो इफ आई कैन डू एनीथिंग फॉर इट. सर विच ऑप्शनल इज गुड फॉर सिलेक्शन लाइक PSIR? बेटा एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, PSIR, हिस्ट्री, दीज आर अमंग द टॉप ऑप्शनल आउट देयर, जिनसे लगभग सिमिलर नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं. सर गिव अस अ टाइम टेबल फ्रॉम डे टू नाइट. अच्छा आदित्य, आई विल डू दैट. गिव मी सम टाइम, आई विल गिव यू अ रफ टाइम टेबल फॉर द डे टू नाइट फॉर पीपल हु आर वर्किंग फुल टाइम. प्लीज सजेस्ट अ रिसोर्स फॉर सीसैट. देखो एक ना मैं आपको फ्री रिसोर्स सजेस्ट करता हूँ. अभिषेक इनामदार सर है, वो अब फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्टेड है. उन्होंने ना अपने सारे सीसैट के लेक्चर्स, लगभग 40 लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिए हैं. यू कैन गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स. बट अगर आप लेवल अप का जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो या आपने ऑलरेडी कर लिया है, देन डोंट वॉच इट. हमारे पास जो मैम पढ़ाएंगी, मैम इज मोर फ्रेंडली, मैम इज मोर वो वीक कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से बताती है. तो आप क्लास में करोगे ही, तो दो टीचर से करने का मतलब नहीं है. Tripti is asking, sir, and sir, how to read newspaper, like how to cover it for examination. Beta, in this phase, November to June, November 2025 to June 2025, आप ना आप खुद से आपको सिलेबस में जो जो न्यूज लग रहे हैं ना वो पढ़ते जाओ, बट जस्ट गिव 45 मिनट्स टू इट. बाय जून, बिकॉज यू वुड हैव डन जीएस के बेसिक नोट्स, you would know what is there in the syllabus, what is not there in the syllabus, और सिर्फ उस पोर्शन को अपने नोट्स में ऐड करते रहना है. रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? हर रोज 15 पेज ही पढ़ पाती हूँ.
बेटा देखो, हर रोज 15 पेज पढ़ लेने के ना दो रीजन हो सकते हैं। एक तो यू आर नॉट डिसिप्लिन, दूसरा है यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज। लैंग्वेज समझ रही होती तो आप तेज पढ़ रही होती। उन दोनों पे काम करो। अगर आप डिसिप्लिन हो तो रीड करो, मतलब देयर इज नो रीजन कि एक दिन में आप 15 पेज ही पढ़ पाओगे। मे बी अभी उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, तो देन इट इज ऑल राइट। नाउ बलजीत इज आस्किंग, सर मैंने करणदीप सर के लेक्चर्स ले रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, पर जब रिसेंटली के पीवाईक्यू देख रहा हूं उनके कंटेंट कैसे बनाऊं, एंड सर ने जो हैंडआउट्स दिए हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे अपने नोट्स में लिखूं। बेटा कुछ नहीं, देखो क्या करना होता है ना, आपके पास अपने नोट्स है, आपको लगता है कि उसमें कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग वाला पार्ट ना एक शीट डाल के उसकी मिसिंग वाले पार्ट की समरी लिख लो, उतना ही लिखो जो ना आप आंसर में लिखने। कि कई बार हम नोट्स देते हैं ना, जैसे कई बार सर रिसर्च पेपर दे देंगे, अब रिसर्च पेपर का सारा चीज नोट्स में नहीं लिखोगे, ओनली दोस पोर्शंस दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर आंसर्स, नथिंग बियॉन्ड दैट। सर हाउ टू मेक नोट्स, इज इट नेसेसरी टू मेक इट इन फर्स्ट और सेकंड रीडिंग? नहीं मोनिका, इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक नोट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग, बट हाउ शुड यू बी मेकिंग नोट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। And that's a very important question. Let me take it briefly. उसके लिए ना first let me talk about how you write an answer. How should your answer look like? So generally in GS your answer looks something like this. You first write an introduction. आप 15 से 20 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखते हो. Then you come to the main demand of the question. आप एक हेडिंग में वो लिखते हो कि द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फिर यू राइट पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, ऐसे करके आप सारे कॉजेस लिखते हो, है ना, एंड यू एक्सप्लेन देम. दिस इज हाउ यू राइट आंसर्स. अब ना व्हेन यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि विद दो शॉर्ट नोट्स यू शुड बी एबल टू राइट दीज आंसर्स. एंड आइडिया क्या है कि यार इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो आप सोचो कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड विद व्हिच यू विल बी एबल टू रिकॉल इंट्रोडक्शन. अपने शॉर्ट नोट्स में बस वो कीवर्ड डाल. ऐसे ही कॉजेस, कॉजेस ना अभी जैसे आंसर में तो यू विल राइट इट इन 50 वर्ड्स, बट इन योर शॉर्ट नोट्स जस्ट दिस हेडिंग एंड मे बी अ कीवर्ड विच विल हेल्प यू रिकॉल द एंटायर लाइन. दैट्स इट. तो आपके शॉर्ट नोट्स फॉर दिस सेक्शन शुड लुक समथिंग लाइक दिस. कि लेट्स से यहां पे आप मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, इंट्रो का कीवर्ड, कॉजेस, कॉजेस में सारे पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल कॉज का मेन फैक्टर भूल जाते हो ब्रैकेट में यहां लिख लो, सोशल उसका फैक्टर कुछ भूल जाते हो तो यहां पे लिख लो. ऐसे तो यहां पे ऑलवेज कीप इन माइंड कि फ्रॉम दीज शॉर्ट नोट्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर. एंड उस आंसर को लिखते टाइम यू नीड टू राइट फॉर एवरी पॉइंट, यू नीड टू राइट 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स, बट हियर summarize those 20 words or 30 words in one or two keywords. Ki through those one or two keywords you'll be able to recall those 20-30 words and that will be good enough. This is roughly the notes have to be done. सर इंग्लिश वीक है, मैं मराठी में प्रिपेयर कर, रीडिंग स्पीड में कैसे? बेटा आप अगर मराठी में प्रिपेयर कर रहे हो थोड़ा सा जैसे जैसे आप रीड ज्यादा करते जाओगे योर स्पीड विल इंप्रूव. Sir, I'm taking 1 day to complete one chapter of 6th NCERT. Please address me, sir. Beta, it's okay. If you're taking 1 day to complete one chapter, पता है क्या होता है? जैसे if I ask a student, read this chapter of NCERT, a student may read this in 2 hours. But वो 2 hours में उसने read कर लिया पर उसे कुछ समझ में नहीं आया. You're taking 1 day, but you're ensuring that every aspect in it is understood. आपको जो समझ में नहीं आ रहा उसको underline करके, Google करके आप समझ रहे हो, तो even if you take 1 day, that is completely fine. Because when you will be done, you will understand the concepts way better than people who have been able to do it very fast. Sir, what about me who has office from 1 p.m. to 10 p.m.? Nitumoni, beta, dekho, you have office from 1 p.m. to 10 p.m. You come back at 10, you have your dinner, you take some rest, you sleep at 1 or 2, I guess. हाँ, 1 बजे तक सो जाते हो कि जितना जल्दी हो सकता है सो जाओ. Then you get up at 7 or 8 in the morning. अब देखो, you have office at 1 p.m. अब 8 to 12 या 7 to 12 you have 5 hours. उसमें 4.5 hours पढ़ने की कोशिश कर लो, है ना. टाइमिंग डजंट मैटर, आप सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश कर लो. आप 10 बजे ऑफिस से आ रही हो, कोशिश करो कि यू आर हैविंग योर डिनर बाय 11:30 12 तक आप सो रही हो, 6 बजे उठ जा रही हो, एंड 6 बजे से 12 बजे के बीच में find out 5 hours and try to study there. And we have already talked about how those schedule will work.
Sir, can I get PDF of today's class? I'll ask my team to put it, send it if you need it. So I'm staying in Hyderabad and I want to join LevelUp IS. So should I compulsorily come to Delhi for my preparation? Can I attend online classes? If yes, then what are the benefits from offline students? As you can explain. Sanjay Kumar Kottakonda. Sanjay, I'll tell you. देखो, if you're someone who at home have a personal room and very understanding parents who will not disturb you no matter what, whether some relative comes at home or whether something important is going at home, if you say I don't want to be disturbed, they won't disturb you. And if you are disciplined enough, stay at home. Home has its own advantages. Kaise? You'll get food, there will be people to take care of it, there will be mental support available, everything. But home is also a place where everyone wants you to participate in everything. If you cannot avoid it, come to Delhi. Now, Delhi mein disadvantages kya rahega? It's a polluted city. You will be distracted by a lot of things. Food will be problematic. You will have to find a good place for food and everything. But advantage will be you'll be sitting in class. So when you're sitting in class for 2.5 hours, there's no option but to complete this lecture. You will have weekend test. You'll be meeting your mentors directly. They'll be asking you, chalte chalte, तूने test दिया था क्या कल का? क्यों नहीं दिया? All these things will keep you accountable. And so if finance is not a constraint, and if you cannot ensure that at house no one will disturb you, come to Delhi. But if finance is a constraint, तो staying in Delhi is difficult or expensive. And घर पे क्या है? घर पे there is a separate room available for you. Stay there, work there. Ayush, in this case, no, because you're done with sociology. Please make sure कि अभी when you are jumping onto GS preparation, you continue revising sociology for 1 hour a day. आपके पास 3 घंटे बच रहे. Watch GS in 2 hours. Like run the GS lectures at 1.25 का speed rather than at normal speed, so that you're able to complete it in 2 hours and 1 hour उसे revise करो. Then at the end of weekend, Saturday को you can give Saturday for entire revision of sociology and Sunday for entire revision of GS. You can do something like this. Sir, I have limited study material. Can I manage to cover? How can I manage to cover this course? Beta, limited study material is good. I'll have to understand what limited study material do you have before before I can comment about it. Sir, classes कब से start होंगी PSI optional की? Beta, it will start somewhere in April, not before that. Sir, are 5-6 months enough for prelims preparation? If you have done with foundation, तो देखो, we are not saying 5-6 months पे prelims preparation होना चाहिए. अभी in November, from November to June, when you are studying basics only, no? So you are preparing for prelims then only. Then from January to April, there's nothing else that we are doing other than preparing for prelims. सर सीसैट के लिए कौन सा वीडियो? यार मुझे चैनल का नाम याद नहीं है, बट अभिषेक इनामदार सर है, ही इज अ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर एंड उनका सीसैट का लेक्चर है. तो एक बार आप सर्च कर लेना अभिषेक इनामदार सीसैट लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, और I'll find the YouTube channel and I'll ask my team to SMS all of you. MA कहां से करूं सर? DU से या कहीं और से? बेटा अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर इट. मतलब आप कहीं से भी कर सकती हो. आई डू नॉट नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर. हाँ बेटा, अगर आपके पास फुल टाइम है ना, इफ यू आर अ पर्सन हु इज स्टडिंग फुल टाइम, ये दिस इज अ क्वेश्चन बाय शैन हामिद कि सेइंग कि मेरा 3 आवर्स का जीएस लेक्चर है, 3 आवर्स उसके रिवीजन पे, उसके सेल्फ स्टडी पे, उसके स्टैंडर्ड बुक्स पे लगाओ. जनरली इट विल डिपेंड ऑन विच class you are doing. जैसे आप मैंने फिर से बताया कि if you are doing classes at LevelUp IAS, so for most of the things you will not need to refer to standard book. हम standard book का सारा कंटेंट आपके नोट्स में, सारा काम का कंटेंट आपके नोट्स में ऑलरेडी रखेंगे. दूसरा, I don't know how you are doing economics का मॉड्यूल 3 मंथ चल रहा है, तो they are not doing it right. There is something wrong with the module. Sir, is it available for online students also? Yes, beta, it will be available for online students also. Sir, I'm struggling in answer writing, can't write in limited time period which is stated by UPSC, can't remember the content. Beta, Mahant, we will, dekho, when we'll study it we'll study mains in question answer format only, which will help you understand, okay, इंट्रो में मुझे ये लिखना है, तो हम ना रिवाइज भी उसे वैसे करेंगे. व्हाइल रिवाइजिंग व्हाट विल बी रिकॉल, व्हाट इज माय इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द हेडिंग, व्हाट आर द सब हेडिंग्स, एंड यू विल सी after 1 or 2 revisions you will be able to, that recalling will not be a problem and you will be able to write it in a timely manner. As new edition of NCERT get printed, which should I prefer? बेटा my recommendation would be, एक तो जो very old NCERT थी ना वो प्रेफर करो, और फिर लेटेस्ट वाली दोनों, मतलब 2 चीजें करो. जो old NCERT थी, जो
बिपिन चंद्रा ने लिखी थी वो वाली करनी चाहिए, प्लस द लेटेस्ट वंस यू शुड बी डूइंग दैट ऑल्सो। सर हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन विद द कॉलेज, बेटा यही तो समझाया था ना अभी, द होल वीडियो वाज अबाउट दैट कि यू हैव 4-5 hours, if you have 5 hours every day, how should you be preparing? In fact, we will upload this video or we will send the link of this video to you, there you'll be able to cover it. सर मैं पुणे में रहती हूँ, क्या मुझे एमए के लिए दिल्ली में जाना चाहिए या पुणे में ही मेरा मास्टर्स भी हो जाए और यूपीएससी प्रिपरेशन भी हो जाए? बेटा पुणे में ना ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही मीडियोकर है इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। मैंने एक दो जगह वहां पे काम किया है एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर व्हेन आई वाज नॉट अ वेरी गुड टीचर, और मैं वहां पे स्टार बन गया था। तो मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप दिल्ली से ही करिए, नॉट फ्रॉम पुणे। ओके ओके गाइस, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hour, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। महंत इज आस्किंग व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवीजन सर, इज इट एक्टिव रिकॉल और प्ले? हाँ, एक्टिव रिकॉल इज अ गुड मैकेनिज्म, लाइक you try to recall whatever you have studied, and if you are forgetting something, go back to your notes and see that will help you. Beta, I already answered, Raj, I answered this, no? If you're taking 1 day to complete one chapter, if your reading speed is slow, keep reading, it will improve. But if you're spending 1 day and ensuring that each and every word in the chapter is properly understood, that is completely fine. Keep spending 1 day. कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आप अगर ज्यादा अच्छे से समझ रहे हो, उसे जान रहे हो, उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझ रहे हो, that is why you're taking 1 day, then it's completely fine. Okay, चलिए, thank you very much everyone. I'll hope to see you all in future sessions if you'll need anything, and in case you need to connect with me, give a phone call in office and they'll schedule an appointment. कोई भी doubt, कोई भी concern रहेगा, I'll help you people. Okay, thank you very much.